मैं एक बात बोलूं सच्ची सच्ची सच्चे दिल से कि जो भी हफ्ता जब भी इंटरनेशनल ब्रेक नहीं होता ना आजकल स्पेशल लगने लगा है ओके बट ऐसे कोई कोई वीकेंड्स आते हैं जहां यू हैव द बिगेस्ट गेम इन क्लब फुटबॉल El Clasico. And we find ourselves in that weekend once again. And we find ourselves once again in that situation where it is one versus two. And it's a special game. It's a special video. इसलिए हमारे साथ दक्ष मौजूद है. Daksh, thanks for taking all the time, bro. सॉरी, इट्स ओके मैन, मैं बिजी इंसान हूँ, बट तुम लोगों के लिए कुछ भी. वही because you don't have the time for Baba and Lols, but you have time for us. So makes us feel very very special. Makes us feel very very special. Guys, Nidhi, let's start with you. Let's start with you. The biggest game in club football, El Clasico. यस एब्सोल्युटली. देख यार, मतलब मैं एक बात बताऊं, जाबी अलोंसो के लिए दिस इज perhaps the biggest test he's faced at Real Madrid so far. Start उसका absolutely brilliant रहा है. He's proved himself. His Mbappe का form, everything has worked out for him beautifully. बट दिस इज द बिग टेस्ट. देख क्या है ना कि ये एल क्लासिको का वेटेज फ्रॉम आई नो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ रियल मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू, बट बिकॉज विल कम टू बार्सिलोना लेटर, बट बिकॉज फॉर रियल मैड्रिड क्या है ना कि लास्ट सीजन वो लोग बुरी तरह से हारे थे. ऑलमोस्ट एवरी क्लासिको दे लॉस्ट बैडली. तो उसका एक देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नैरेटिव अबाउट दैट कि भाई व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट दैट. इस सीजन ऑब्वियसली उतनी इंजरीज नहीं है. यू आर एक्सपेक्टेड टू बाउंस बैक. जो डिफेंस की प्रॉब्लम्स थी वो एड्रेस की हैं. जाबी अलोंसो, बिग टेस्ट अगेंस्ट द ओल्ड एनिमी. हाउ डज ही फेयर? बार्सिलोना के लिए भी इट्स अ बिग वन, क्योंकि बार्सिलोना आर कमिंग फ्रॉम उनकी बहुत बार इंजरीज है. एक तरह से यू नो द रोल्स हैव बीन रिवर्स्ड, because last time Real had a lot of injuries, this time Barca have a lot of injuries. Barca are playing catch up. You don't want to get too lag too behind जब ये सीजन स्टार्ट होता है, बिकॉज क्या होता है कि इफ 3 2 4 5 पॉइंट का गैप एस्टेब्लिश हो गया, अभी 2 पॉइंट का गैप है, 5 पॉइंट का गैप हो जाएगा अगर रियल मैड्रिड जीत जाती है तो वो एट दिस अर्ली स्टेज स्पेशली इन ला लीगा कैन बी फेटल टू अ टाइटल रेस. तो बार्सिलोना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हांसी फ्लिक विल बी ईगर टू प्रूव कि भाई लास्ट सीजन जो वो जीता था वो रियल की इंजरीज की वजह से नहीं जीता था. द टीम इज एक्चुअली रियली गुड. सो it's a brilliant time. मजा आएगा देख के. Daksh, is this Barcelona team more stronger या weaker than last season? तेरे हिसाब से? It's tough to say, man. Like at this moment of time, definitely it's not as strong as it used to be last season. Last season, like for example, I'll give you an example. Kunde was absolutely insane. Wo, I would say he was one of the best defenders in the world at that point of time. This season he's just been a little bit off. Yeah. इस season I think बार्सिलोना के साथ इंजरीज ने काफी अर्ली कैचअप कर दिया है. लाइक लेवेंडोव्स्की जैसा प्लेयर जो क्लच गोल्स मार सकता है, ही इज नॉट अवेलेबल. रफीनिया इज नॉट अवेलेबल. Ferran is a doubt, I think, as well. But apart from these things also, यार, in general, Barcelona just looked more vulnerable, you know. Like last season एक ऐसी feeling आती थी कि everything was so well oiled. कि like, हाँ, they would score goals, but they had this very unique system of just playing so aggressively their defensive line कि वो offside सबको catch कर लेते थे. So barely they would concede any goals. Like तुझे याद है last season हमें लगता था ओ ये highline तो Mbappe expose कर देगा and all that stuff. But it never really happened, right? Mbappe was offside like 4 times in a game or something like that. And Barcelona ka system was very well oiled. This season, it looks like it's a system Joe, I think a lot of teams have figured out in a way how to play against. Like Sevilla wala game comes to my mind, where in the first half itself, I think they could have scored like 4 or 5 goals in that sense. And Sevilla is not some great attacking team. It has decent attackers, but Alexis Sanchez was playing in that front line, by the way. So I was this season I think Barcelona look a lot more vulnerable. And जैसे निधि ने बोला था, to just piggyback on his point as well, I think Real look a little bit different. Obviously, you know, Xabi's played in El Clasicos before as a player, so as a manager, it's a completely different game for him. But he's familiar with the kya scale hai, kya expectations and everything from Real Madrid. But even Real Madrid looks so different compared to Ancelotti's last season, because before the Atleti Madrid game, na, Madrid just conceded, I think, only one big chance. And that is very different for a Madrid side focusing on defense and structure a lot. पहले तो मैड्रिड का होता था कि आगे वाले खेलने दो, डिफेंड तो हम किसी ना किसी तरह कर ही लेंगे.
But this time with under Xabi, it feels like a team which is much more structured, much more disciplined. On the other side, जैसे तूने कहा Barcelona, I just personally feel don't look as strong. But we'll come to Barca as well. But I think Barca still has a few weapons जो use कर सकते हैं इसके अंदर. Nidhi, what are those weapons for Barcelona according to Dakshna mentioned? Because we play Real Madrid once again in a customary seasonal game with them. हाँ. So Barca can lay down the blue. Listen, Barca has laid down the blueprint against Real Madrid quite a few times over quite a few seasons, but उसको follow करना तो बहुत मुश्किल होता है. But how is this Real Madrid team beatable? What is their weakness? क्या कर सकते हैं कोई भी team, especially Barcelona? And अभी Rafinha भी नहीं है. देख, हाँ, मैं उसी पे आ रहा था. देख, वीकनेस का तो मुझे पता नहीं. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल व्हिच इज लमीन यमाल वर्सेस करेरास. तेरे को पता होगा, करेरास ऑफ कोर्स लास्ट सीजन वो बेनफिका में खेल रहा था, तो बेनफिका के अगेंस्ट मतलब 5-4 और 1-0 जीती थी. दो लेग्स में 6 गोल मारे थे बार्सिलोना ने. एंड यमाल बहुत अच्छा, मतलब ही डिड नॉट डू पर्टिकुलरली वेल अगेंस्ट करेरास, राइट. एंड वो मैच याद होगा, एंड इट वाज अ वेरी सॉर्ट ऑफ जैमी गेम फॉर बार्सिलोना. मतलब जो एक्सपेक्टेड था कि बहुत आराम से बार्सिलोना जीतेगी, वो थोड़ा जैमी था. अब यमाल का क्या है ना कि ही इज आल्सो अ प्लेयर दैट इज मोटिवेटेड बाय इंडिविजुअल बैटल्स. अभी क्या है, उसने एक दो कुछ कमेंट्स किया है व्हिच हैज एडेड फ्यूल टू द फायर. विल कम टू दैट आल्सो. ठीक है, वो तो मतलब नॉन फुटबॉल बोलना एस्पेक्ट हो गया. बोलना क्या हाँ, बोला तो वो? he said something to the effect of Real Madrid cheat and they complain, and last season we beat them 4-0 or something or something मतलब of that effect. is like that is like a YouTube comment, bro. हमारे streams में, bro. all he had to say was Vardred. Penalty for Madrid. Yeah, penalty por favor Madrid, ऐसे कुछ कहना था और उसके बाद Vardred बोलना था उसको इस Vardred, podcast पे. That's it. He would have been a हाँ. YouTube comment. 15 times. देख यार, यमाल जब से इंजरी से वापस आया ना, वो थोड़ा रस्टी दिखा है. ही इज नॉट लुक्ड लाइक एग्जैक्टली. अबे हंस क्या रहा है साले, रस्टी दिख रहा है वो. नहीं वो कौन सी इंजरी से आया और तूने जो वर्ड यूज किया है. मैं भी कह रहा था pubic injuries are very difficult to recover from. ड्राई स्पेल चल रहा है बेचारे का. I think it's the opposite of the dry spell because of which he got injured. But anyway, I think यार देख, उसका ना जब से वो इंजरी से आया, he's looked a little off compared to last season. अब वो especially against a defender who did well against Yamal last season also, उसके against Yamal कैसा करता है? That is a key battle. What are the weapons that Barcelona can use? देख यार, I think midfield, Pedri, Frankie de Jong, I think midfield में Barcelona on paper, I think they are superior. This is my personal opinion. I think that is one of the weapons they can use against, क्योंकि Pedri का एक ball, Lamine Yamal, Rashford is in red hot form. We have not spoken about Rashford अभी तक. भाई Rashford भी बहुत सही फॉर्म में है. फेरान टोरेस ने दिखाया है पिछले सीजन भी, ये सीजन भी कुछ हद तक, कि इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में गोल स्कोर करता है भाई वो. So these are the weapons that I think he can. The big question for me is Yamal versus Carreras. The biggest weapon, if you ask me, is the midfield. And Daksh, obviously बात है, Real के लिए the biggest weapon is Kylian Mbappe. Guys, crazy bhai. I think Crazy. I was watching I was watching another preview the other day, yesterday in fact. And मैं देख रहा था कि Mbappe कितने ज्यादा shots ले रहे हैं, उसका I think per shot XG is like 0.2 के आसपास or something like that. Which is crazy by the way. He's taking a lot more shots, but he is in red hot form भाई. देख, Mbappe ने तो last season भी 50 GA के आसपास मार दिए थे, but this season it's crazy. And I think one of the best things that Xabi Alonso has done is figure out a balance within the front line. तो याद है लास्ट सीजन हम क्या कह रहे थे कि लाइक दोनों लेफ्ट साइड पे रहते हैं रोड्रिगो ही राइट साइड एक विंगर है, कोई सेंट्रली नहीं है. दिस सीजन इज फिगर्ड आउट अ वे कि विनी और एम्बापे को एटलीस्ट एक साथ कैसे खिलाना है. ही इज आल्सो सॉर्ट ऑफ फिगर्ड आउट कि प्ले मेकिंग एंड क्रिएटिविटी के लिए हम आर्दा गूलर को ले आएंगे. They've also gotten मासंतोनो या डियाज जो भी राइट विंग पे खेलते हैं, रोड्रिगो को पूरा बेंच कर दिया. जबकि मुझे पर्सनली लगता था दैट रोड्रिगो इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट फ्रंट थ्री, बट टू मेक दैट फ्रंट लाइन वर्क without Rodrigo and to find a balance in that front three is absolutely insane. And
Bhai, I am not even I know there's a lot of Madrid fans who hold the opposing view and everything, but I have a genuine belief कि this is now slowly turning into Kylian Mbappe's team. Kylian Yeah, Mbappe's team. It's not like Vinicius Junior's team. It's not Jude Bellingham's team. It's him. He is the guy who wants the ball. He is the guy who wants to score from. And I would say Daksh, do you blame Javi Alonso for that? For this becoming a Mbappe team? I don't think it's a You can't, blame, right? right? You can't No, no, blame no, no, him. not at Yeah, all. yeah, Bhai, if you yeah. have one of the best players in the world playing for your team, you want to make the team about him. सिंपल सी बात है देख अंडर एंचेलोटी जब बेंजेमा नंबर 9 खेलता था बेंजेमा का कैरेक्टर ही ऐसा था कि वो सेल्फलेस था वो बाकियों के लिए क्रिएट कर सकता है सो विनी की टीम बन रही थी उस टाइम कि तुम विनी को मैक्सिमाइज करो रॉड्रिगो को मैक्सिमाइज करो जूड को लाओ देन व्हेन जूड स्टार्टेड कमिंग इन एंड प्लेइंग सो जूड ट्राई टू पुट हिज इम्प्रिंट not to say none of the other players cannot be the protagonists and stuff but इस टीम का clear protagonist is Mbappe. He is the one on pens. He is the one who is going to take the shot if the chance half a chance भी होता है वो बना देगा एंड मैंने भी जितना देखा है विनी भी उसके लिए अब चांसेस क्रिएट करने लग गया है इट्स नॉट लाइक विनी अपने खुद के शॉट्स नहीं लेता वो भी लेता है बट इफ ही सीज एम्बापे इन अ क्लियरर अपॉर्चुनिटी ही विल पास द बॉल टू हिम सो मेरे हिसाब से इट्स एम्बापे's टीम राइट नाउ देयर आर ऑब्वियसली प्लेयर्स लाइक फेडे देयर आर ऑब्वियसली प्लेयर्स लाइक जूड they're obviously Courtois, obviously Vinicius भी मैंने जैसे कहा but Mbappe I think is the main protagonist of this team but yeah last thing about that thing is that Madrid ka I think right back wala situation will be very interesting who starts Trent might be available maybe Fede is there and when you talk about weapons that Barcelona has I think in general Barcelona ka biggest weapon against Madrid is individual talent and they have that in droves. Pedri जैसे नहीं देने का 100%, Rashford 100%. But Barca has this knack of producing great talent. Fermin Lopez क्या क्या crazy खेल form रहा है यार. है? Yeah. It's वो खेलेगा, I'm पक्का genuinely खेलेगा. relieved. हाँ I'm genuinely relieved he didn't go to Chelsea भाई. Like him at Chelsea would have been another मतलब crazy scene हो जाता. But very happy that he's in Barca and he's performing so well. That little kid that they've again produced, Dro, भाई. Dro Fernandes. Seven, हाँ. yeah, 17-year-old midfielder. He's so good. But I think इस game में, especially if that right back side of Real Madrid is super weak, and the fact that there's no Rafinha, I think इस game पे बाल्डे का बहुत important role होगा. बाल्डे बहुत अच्छा खेला था last game में बार्सिलोना के लिए. आगे ऊपर नीचे करता रहता है. He can literally run the entire left wing by himself. He is that good. देख यार, it's very very evenly poised. 24 points for Real Madrid, 22 points for Barcelona. 9 Yeah. games हो गए हैं. Goals for Barca have scored more. But Barca have conceded one more as well. So ऐसा नहीं है कि Barca is leaking goals left, right and center, जो एक narrative कभी-कभी develop हो जाता है, highline this, that. Nidhi, Yeah. you guys have very clearly spoken about the talent at display. Of course, ये like at the end of the season, usually जो ये tie जीत जाता है over 2 legs wins the La Liga. But do you think ये particular fixture से ये season का Ballon d'Or winner भी मिलेगा? Because World Cup year भी है. But you have so many superstars. You have, Yamal, you have Vinicius, you have Mbappe. You get what I'm saying? Like we're heading into when these two teams play, these conversations arise. Do you think we are seeing a future Ballon d'Or winner from this fixture, this team right now? These teams. Possibly, but then Haaland, Kane, ये लोग को आप इग्नोर नहीं कर सकते. अगर जी. बैलन डॉर डिस्कशन है, डेफिनेटली रियल मैड्रिड बार्सिलोना के प्लेयर्स का चांस बनता है. एम्बापे जिस हिसाब से खेल रहा है, अगर इफ यमाल हैज अ सुपर ईयर अगेन, तो हो सकता है भाई कि वो भी जीते. And then we have Curtis Jones Manus, isn't it? So Of course. मतलब so yeah, in all honesty हो सकता है, but I think there are more contenders in that battle. मतलब मेरे को तो हालैंड और केन बहुत सॉलिड कंटेंडर्स लग रहा है. अगर तू मेरे से अभी अर्ली चॉइस पूछेगा तो. बट पता है, एक बात तुम लोग ने बोली अबाउट वेपन्स एंड एवरीथिंग. पता है एक चीज जो बार्सिलोना को अलग करनी पड़ेगी ये मैच में, पिछले साल जितने एल क्लासिकोस हुए थे ना, उसमें बार्सिलोना वेंट अप एंड डिफेंडेड आल्सो इन अ वेरी डिफरेंट वे. मुझे लगता है कि इस साल बार्सिलोना को थोड़ी अब उसको अगली नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी रूडिमेंट्री डिफेंडिंग करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से. इट
I don't think it needs to be pretty all the time at every instance. मतलब कहने का मतलब कि कई बार अगर ऐसे बॉल मिले, I think with the form Vinicius has found himself in, and Mbappe का especially जो form है, ये मैच में I think from a Real Madrid point of view they would like to start Trent because he can provide those balls, which is Barcelona का हाईलाइन को exploit कर सकते हैं. सेविया ने भी किया था और एक दो बार ये सीजन हुआ है. तो बार्सिलोना हैज टू बी अ स्लाइटली rudimentary side in defending. बॉल मिल रही है, क्लियर कर दो. डोंट ट्राई टू प्ले द बॉल फ्रॉम द बैक ऑल द टाइम. Nidhi, do Real you Madrid think will it is in their DNA? Do you think it is in their DNA? It is in Hansi Flick's philosophy कि for a match वो कुछ अलग कर रहे हैं? Not in their DNA particularly if you are asking me, but Hansi Flick कर सकता है, but उसने किया तो नहीं है. So I doubt it, but मुझे ऐसा लगता है कि कुछ instances पे if you try to play the ball out from the back, that can backfire. You'd hope so कि like थोड़ा सा pragmatism उसने incorporate कर लिया होगा. I am not like usual हर match पे बारसा को देखूं, but you'd hope थोड़ा सा pragmatism उन्होंने incorporate कर लिया होगा simply because I always go back to that Inter वाला game, you know. It was wrapped up. And there was no need to like sort of Go and attack. still be exactly, you could just be for 2 minutes little more, as they say, haram ball, or just as Nidhi says, rudimentary defending and stuff. That being said, like maybe like it's like a double-edged sword, right? Ki like some of the comebacks they've made over the over the last year has because it's because they don't ever give up on their way. Like I remember this game, I think Espanyol ke against tha. They were down and out, bhai, and last moment pe they ended up winning. So probably like it's a risk they're willing to live with, and I don't think that's a necessarily bad thing. In this game though, I would say there's so many things stacked against Barcelona. Injuries, away from home, Madrid on top, the stakes, जैसे मानस ने in introduction में बोला था, you don't want a 5-point gap opening up right now at this early part of the season. You want to leverage all the tools you have. Like we haven't spoken about Rashford. Rashford as the player which has the most GA for Barcelona. Who thought, bhai? He's got like 10 or 12 GA if I'm not mistaken. 10 GA I think if I'm not mistaken. But crazy good form, yeah. Left wing pe he started out. I remember his first few games he was subbed off because वो physically उतना नहीं लग रहा था ready. But now he's scoring. He scored 2 amazing goals in the last, I think, the Champions League fixture against Olympiacos. Yeah. He's been fit. He's been available. He's been lethal. He looks ready. And I think Barcelona will play him as the number 9 in this game, which is going to be very interesting because in the Prem he never usually works at number 9. I always remember जब उसको 9 खिलाता था कोई भी, हमेशा गैरी नेवल बोलता था, I think his best position's off the left coming inside. मैं बोलता था अच्छा ठीक है. But yeah, he's going to be the number 9. He's going to have the responsibility because in these Clasico games, more often than not, the number 9s decide it. You've seen Suarez do it, you've seen Lewandowski do it, and now it'll be Rashford's responsibility to do it as well. Crazy होगा bro अगर Rashford wins a Clasico, bro. Who would have thought like who would have few thought months that back? Rashford can be the difference maker in the Clasico, bhai? Like everyone's talking about Mbappe, everyone's talking about Vinicius, Lamine, Pedri. Imagine Rashford turns out to be the protagonist for this one, bhai. And it's possible. It's not even like beyond the realm. हम कुछ अजीब चीजें, हाँ, हम कुछ बहुत अजीब predict कर रहे हैं and everything. The form he is in as well. That's crazy, yaar. So yeah, like this is a huge opportunity for Marcus Rashford to step up when the team is severely depleted, yaar. Yeah, बहुत interesting match होगा. I just feel this could अगर Trent खेलता है guys, this could be a game for him to stamp his authority and make himself, you know, like feel like a proper Real Madrid player because in and out रहा है, मतलब consistently खेला नहीं है और फिर मतलब मुश्किल होता है जज करने के लिए because you know like the limelight जितना लोग को लगा था कि ट्रेंट को मिलेगा बिल्कुल नहीं मिला है for obvious reasons because वो खेला ही नहीं है. So if he does play and if he जैसे निधि ने बोला you know like बारसा का हाईलाइन if he provides those assists instant hero बन जाएगा in the eyes of Madrid fans. Guys 20 मिनट हो गए so let's take your predictions starting with निधि. निधि क्या बोलता है? ये तो लिवरपूल का मैच नहीं, इधर तो प्रेडिक्शन दे सकता है खुलेआम.
हाई स्कोरिंग मैच है। मैं जीशान के चैनल पे भी मैं बात कर रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे दैट दीज टू टीम्स प्ले ना, मेरे को ऐसा लगता है कि रियल एम्बापे का फॉर्म वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। बार्सिलोना विल प्ले एन एक्सपेंसिव स्टाइल, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं अपना स्टाइल। रैशफोर्ड का भी फॉर्म एपिक है। लमीन यमाल जनरली हमने जब भी देखा है, बिग गेम्स ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम। सो ये सब को ध्यान में रखते हुए आई थिंक इट विल बी अ हाई स्कोरिंग गेम एंड आई एम गोइंग फॉर अ 2-2 ड्रॉ। मेरे को लग रहा है 4 गोल होंगे ईदर साइड, और इट विल बी अ लास्ट मिनट इक्वलाइजर फ्रॉम वन ऑफ द साइड्स। If you had to choose a winner, Nidhi. If I had to choose a winner by form, I'd have to go with Real, but I think it will be a draw. Okay. Daksh. Yeah, I was also going for a high scoring draw, but my draw is higher scoring than Nidhi's. I'll go for a 3-3. I think दोनों टीमें गदर मचा देंगी, and I think it'll be a 3-3 draw. But if I had to choose a winner, I'd go for like a 3-2 scoreline for the home team, and I'll tell you why. I think इस game में ना biggest differential will be the keepers, because एक side है Thibaut Courtois, who's one of the best in the world. अगर जोन गार्सिया होता बारसा के पास available, I would keep Barca in the game longer, but it's Chesney. That could be a very big differential on कौन clutch saves करता है, कौन नहीं करता. So I'm just edging it to Real Madrid, but I honestly see it as a 3-3 draw. And with a draw, honestly, I think Barca obviously won't be like elated by it, but I think they'd be happy considering the injuries and everything they have. My sister is a huge Barcelona supporter. I don't bring it up on the channel YouTube for obvious reasons, but she was we were having dinner last night. एक ही सिबलिंग सही से वो पैदा करी है। क्या हो गया? एक अच्छा एक बुरा, ये कैसा हो गया? दीवार। Not confident. She was not confident. देखा मैंने ये वीडियो में बोल के लग रहा है गलती कर दिया मतलब अपने ही ले रहे हैं भाई, बाहर वाले का। She was not confident heading into this game because of the injuries, especially Rafinha ka. She feels Rafinha is the key player of this Barcelona team, and she's been saying this for a while. So, since last season. So, I I just feel, and especially at home, Madrid is at home. They're on top at the moment. Last 5 games में दोनों teams का 4 wins 1 loss है. So and Xavi has lost the derby, okay, comprehensively, okay, and this is a massive test of Xavi Alonso. I have said this a few times. Last season Liverpool के against for Leverkusen पेला गया था. Atlanta final उसके एक सीजन पहले पेला गया था वो, so Gasperini, so against, and इस पर Simeone. So when you come up against big managers, big teams, so he as a manager has a point to prove. So I think this is where he will be very careful. I am expecting goals. I'm going for 2-1 Real Madrid over here. Okay. 2-1 Real Madrid. All of us essentially, if we have to pick winners, are going for Real Madrid. But I genuinely believe that if Barca जीत जाती है, it won't be that big a shock also. Of course. No, yeah. But I think not. just because of the form, just because of home, and just because of injuries, I think the natural pick is Real Madrid. But oh man, I wouldn't bet on either teams because I'd be scared of losing money, because both teams can genuinely just show up on this day. I think La Liga competition के लिए अच्छा होगा अगर बार्सिलोना जीत जाए, because it remains competitive for a longer time. I think 5 पॉइंट का गैप, not that अभी तो 10 मैच भी नहीं हुए हैं, but in La Liga थोड़ा प्रॉब्लम 5 पॉइंट का गैप भाई बहुत डेंजरस होता है। हाँ देखो मैं तो बोलूं ड्रॉ होना चाहिए और एथलेटिको जीतना चाहिए ताकि और इंटरेस्टिंग हो थोड़ा ला लीगा। भाई एथलेटिको तो उनका तो अलग ही चल रहा है, वो अलग ही वो लेवल घर से बाहर निकलते हैं ना, पता नहीं क्या हो जाता है। ओह शिट, एक्चुअली ब्रो मेरे को जस्ट याद आया, मैं तो दक्ष के साथ बैठा हूँ, मतलब वो मिलेगा एथलेटिको अच्छे नहीं चाहिए छुट्टा नहीं आगे बढ़। उनका तो अलग ही लेवल पे इनकंसिस्टेंसी चल रहा है भाई। बट दिस वाज द वीडियो, दिस वाज द एल क्लासिको प्रीव्यू मैच। ऑफ कोर्स कल है तो फैन कोड पे
आप देख सकते हो दक्ष भाई ने प्रमोट भी कर दिया, तो उनके रील पे भी कमेंट करो यार। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कितना क्या बदल लगता है। गया इंसान, मेरी दिख गया दक्ष। एक रिंग लाइट के लिए, हाँ, एक रिंग लाइट के लिए हर ट्रेंड की तरह स्पेनिश में बात कर रहा है, por favor, right? Let us know in the comment section आपको क्या लगता है, what are your predictions, आपके हिसाब से who will be the player that will decide this match। और आज ऑफ कोर्स बाकी मैचेस हैं तो उनकी बात करेंगे। we will see you very soon, until then फुटबॉल विद दक्ष को सब्सक्राइब करिए। ये पहला वीडियो है जो हम शायद एक कोलैब के फॉर्म में रिलीज करेंगे, तो सब्सक्राइब टू बोथ द चैनल्स फुटबॉल विद दक्ष एंड मेनेस एंड द मॉन्क। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, and we will see you very very soon। Until then, take care of yourselves, enjoy, and remember one thing, up the Reds। ब्रेडफोर्ड खराब खेलना प्लीज।